Very good morning everyone. It's 9 in the morning. The city looks beautiful, as you can see. This main city center where we are standing now. We are looking for breakfast, then we will take a guided tour. That will be like more informative. They will explain us everything and they will like cover all the city within 3-4 hours. ओल्ड टाउन में अभी हम घूम रहे हैं और यहाँ पे सब बिल्डिंग हिस्टोरिक बिल्डिंग है। ऐसा हो रहा है कि हम हर जगह रुक रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ऐसा वाला सीन चल रहा है। वेदर अभी थोड़ा अच्छा हो गया है, सनलाइट इतनी नहीं है बट अब विंड कम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा मज़ा आ रहा है घूमने में भी। तालिन जो है इस्टोनिया की कैपिटल है। इस्टोनिया एक छोटी सी कंट्री है, फिनलैंड, स्वीडन और इन सब के पास में, और बहुत ब्यूटीफुल है। तालिन सबसे बड़ी सिटी है इस्टोनिया में, जो कैपिटल भी है। आई थिंक वर्थ इट है यहाँ पे आना, विजिट करना, बहुत कुछ देखने को है। सिटी काफ़ी बड़ी है, तो आप आराम से अगर 2-3 दिन का प्लान करके आओ, घूमो मस्त। तो अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो लोग वेट कर रहे हैं मेरा। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सिटी बस है, जो आपको एक सिटी टूर देगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू वॉक अराउंड द सिटी। तो ये अच्छा है, ये आपको पूरा घुमाएगा पूरा ओल्ड टाउन में, न्यू टाउन में सिटी के। So it's like €6 for adults and €3 for kids. So there are a lot of churches in this city, as you can see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये जो आप पीछे देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, और ये सिटी के बिल्कुल सेंटर जो ओल्ड टाउन है वहाँ पे है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ से एक सिटी टूर स्टार्ट होता है अराउंड 12 विंटर के टाइम पे। तो अभी हम उस टूर को ज्वाइन करने वाले हैं। जो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो बट ऐसा होता है कि एट द एंड आप अगर चाहते हो, अगर आपको टूर अच्छा लगा तो आप पे कर सकते हैं कुछ। एंड आई थिंक पे करना चाहिए कुछ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट। वो आपको फ्री में घुमा रहे हैं। अभी 10 मिनट है टूर स्टार्ट होने में। तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि अब अगर आप कहीं भी विज़िट कर रहे हैं तो हमेशा अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा हमेशा साथ में रखें, और थोड़ा संभाल के रखें। एक्चुअली कल हमारे साथ जो एक बंदा था, उसने अपना वीज़ा गिरा दिया जब हम क्रूज़ में आ रहे थे हेलसिंकी से तालिन के लिए। और होटल में आने के बाद उसको याद आया, एक्चुअली सीन ये हुआ कि उसने अपने फ़ोन के साथ में रखा हुआ था। जिस पॉकेट में फ़ोन रखा उसी पॉकेट में अपना वीज़ा रखा हुआ था। तो फ़ोन निकालते टाइम गिर गया। बाद में रियलाइज़ हुआ कि वीज़ा नहीं है। फिर हम वापस गए वहाँ पे लेने के लिए। तो अब थोड़े डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें। आप दूसरी कंट्री में आ रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें थोड़ा केयरफुली रखें। तो चलिए चलते हैं, टूर स्टार्ट करते हैं। The weather is pretty nice. So usually Estonian weather is a bit more rainy, a bit more cloudy, but right now we are in luck. So enjoy this while it lasts. It might not last until tomorrow. And this is one of the main squares of the city. It's called Freedom Square, and it is quite a good example of how different ruling powers try to control places through place names. So this place has had many different names. So Haymarket, Peter Square, Freedom Square, Victory Square, and then finally after 1991, when we regained our independence, we named it back to Freedom Square. ये जो पीछे मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इसके ऊपर ई लिखा हुआ है, जिसका मीन्स है इस्टोनिया, एंड एक सिंबल दिया हुआ है। Kind of like the middle ground between the upper town and lower town of Tallinn. And in medieval times, the city of Tallinn was officially divided into 2 parts. The lower town, where we came from, that was more for merchants and craftsmen, and fancier people lived, and whoever ruled us at the moment usually ruled from the upper town. But the lower town was quite a successful merchant town. So the lower town belonged to the Hanseatic League, or the Hansa, which was like a league of merchant towns all over medieval Europe. So both this whole hill and the whole of the upper town
called Stormberg. Stormberg. So if you look at a map and it says Stormberg something, then this is both the name of the hill and the whole of the upper town. ये जो पीछे आप देख रहे हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च है। अगर दिल्ली में आपने अक्षरधाम टेम्पल देखा है तो सेम कुछ वैसा ही है। कैमरा अंदर अलाउ नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट इट्स ब्यूटीफुल। ट्रस्ट में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इसको विज़िट ज़रूर करना। फ़ोटो अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं, कुछ अलाउ नहीं है अंदर। जाओ आराम से देखो, बड़ी पीसफुल जगह है। आ रहे हो तो ज़रूर विज़िट करना। ऑर्थोडॉक्स चर्च के सामने ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं तुर्गु कैसल है और इसके अंदर जाना अलाउ है। सो लेट्स गो। So this was the main church of the upper town. Well, the dance itself is called Gaerajan, and it means John of the Rod. The first thing to do, if you want to try with me, put your hands like this. Right hand on top, left hand under. Yeah, and then put your right foot in the front and left foot in the back. So like this is the beginning position. And first thing, really easy, you just jump 2 times. Like 1, 2. Very good. Then we have to switch the legs. Like this, like now the left foot is in front, yeah? And again, jump 2 times. 1, 2. Okay, now comes the most important part, but also the most difficult part. We have to switch the legs 3 times, and on the last time, jump 2 times. So like if I count, it's like 1, 1, 1, 2. Alright, let's try. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Yeah. एस्टोनिया में ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इफ़ यू हैव ए टीटी बैट एंड बॉल यू कैन प्ले टेबल टेनिस। ये पीछे का साइड है। अभी हम जा रहे हैं, कुछ नहीं पता एक्चुअली। I survived, that's a lot for me.